Okay, class. Now we're gonna start our sixth chapter, towns, traders, and craftsperson. Here in this chapter, we will study how the towns were created and the traders involved in these towns and craftsmen do what they do in these towns. Okay, now we correlate the three terms in one particular chapter and we will study how they create such a huge history to read in this medieval time. Alright, there is some facts that there are three types of medieval town, that is a temple town, an administrative center, and a commercial town. Okay, at that time you have your administrative center, temple town, okay, and your commercial activities on craft production. Okay, administrative center where the records and the other details were maintained were written by the persons in their manuscript form or in an inscription form. Temple town is basically a temple nearby the town were created and people settled for their habitation. Second, third is your center for commercial activities. When there is a temple, there is a village and town will settle down, and there the production of their commercial where they found their income, where they found their salary. So commercial activities starts taking place at that time, and your craft persons is also very important in this commercial centers because craft persons provide you a craft production like weaving a bag, doing a very beautiful art. So these are the things which we found in such factors in a medieval town. Okay, class. Now we can come to this map. This is map some important center of trade and artisanal production in central and south India. Okay, you will draw this map. Okay, if you have your map, very good. If you don't have your map, please draw these and mark these important center in your copy. All right, so very important centers are, just see the south area having a lot of centers which is very important for trading. Okay, you have to draw and mark the names. Okay, coming to the next page, administrative centers. Administrative center Thanjavur, the capital of the Chola, thousands years ago, emerged as an administrative center as well as a temple town. So Thanjavur we have revised in previous chapter also why Thanjavur is important. There is a temple which make this temple very important there, and Thanjavur is the capital of Chola. So at that time this become very important place for administrative center. Tanjore was an administrative center. Kings held courts in the mandapas, which were part of palaces, issuing order to their subordinates. So king, what they do, they have in their court a mandapa, a huge area where they settle down and have a discussion and give orders to their subordinates जो उनसे नीचे काम करते हैं उनको वो ऑर्डर देते हैं. Temple Town represent a very important pattern of urbanization, the process by which city develops. So Temple Town जब create होता है वो एक डायरेक्शन होता है या एक पैटर्न होता है जहाँ पे अर्बनाइजेशन या सिटी डेवलप होने लगता है क्योंकि as the craft production, as the activity increase, people start making their own area to occupied with this some special activity person or a craft person. Suppose if five or three people were a pottery maker, they will form a group and they will settle in some corner area or some other place. So at this time the temples now giving a space to the city's development. Rulers in this time built temples to demonstrate their devotions to various deities. तो then यहाँ की जो temples
में जो स्टैचूज रखे जाते थे वो ब्रॉन्ज के होते थे, बहुत बड़े होते थे, यहाँ तक कि मेटल से जो चीज़ें बनाई जाती थी वो एक थी आपकी एक्सॉटिक मेटल से आइडल बनाते थे, ऑर्नामेंट बनाते थे और लैम्प्स बनाते थे। ओके, और जो ये लोग बनाते थे उनका नाम था स्वामी मलई और सतपतीज, ये जो बनाते थे। प्लस यहाँ पे कॉटन के सामान या कॉटन जो है वो लार्ज प्रोडक्शन किया जाता था, बिकॉज पीपल यूज टू वेयर द कॉटन क्लोथ्स ओनली। थर्ड, rulers have made a lot of temples for their devotion to their god. So in this era people have made lot of temple town here. Now coming to the next topic is temple town and pilgrimage center. Important temple town were Bilaswami in Madhya Pradesh, Somnath in Gujarat, Kanchipuram and Madurai in Tamil Nadu, and Tirupati in Andhra Pradesh. So these are the important temples which are very important for our today's world also, because it do exist here. Pilgrimage centers also developed into a township. Example, Vrindavan in Uttar Pradesh and Thiruvan and Tirumalai in Tamil Nadu. So you will see how these temples provide you a very important place for their productions and tradition, because people used to grant the land and money to the temple, and due to this they celebrate, they invest in their productions. Okay, this is a bronze temple. Okay, this is a bronze statue, and how it is made you can just read here, lost wax. ओके इसको कहा जाता है लॉस्ट वैक्स टेक्निक। इसमें क्या होता है कि मोल्टन वैक्स को ड्रेन किया जाता है एक हॉलो से स्ट्रक्चर में, एंड उस हॉलो से स्ट्रक्चर में जब इसको डाल दिया जाता है उसके क्ले मोल्ड थ्रू द होल, ओनली द मेटल कोल्डेड एंड सॉलिडिफाई द क्ले कवर्ड वॉज केयरफुली रिमूव। तो एक क्ले से एक ढांचा बनाया जाता है जो भी आपको आइडल बनाना होता है, फिर उस क्ले के ढांचे में आप अपने मेटल को एकदम मेल्ट करके डालते हैं। जब वो एकदम ठंडा सॉलिड हो जाता है तब आप उस क्ले को हटा करके आपको उस मेटल से बनी हुई अपनी मूर्ति मिल जाती है, उसको आप कहते हैं लॉस्ट वैक्स। ये एक टेक्निक है जो आज भी यूज़ की जाती है लोगों से। सो ये एक टेक्निक है जिससे सबसे पहले क्ले से एक ढांचा बनाया गया होगा, फिर उस ढांचे में वो मेटल वैक्स को डाला गया, जब वो ठंडा हो गया और सॉलिडिफाई हो गया होगा तब जा कर के आपको ऐसी मूर्ति मिली होगी। Okay, so I have just told you about some important towns which is created around the temple. So please learn these temples name, very important. All right, and there is some temple which is an example of township. For example, your Vrindavan and your Tiruvannamalai in Tamil Nadu and Ajmer in Rajasthan, जो चौहान की कैपिटल हुआ करती थी 12th सेंचुरी में। सुबह हेडक्वार्टर अंडर द मुगल। ओके, सो ये वेरी इंपॉर्टेंट में आप डालिए क्योंकि इसको याद करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे ही आपके कुछ और 12th सेंचुरी में डिवोटीज थे और जो सूफी सेंट आए थे उन्होंने अटैक किया था, जिसकी वजह से अजमेर, नियर द अजमेर इज़ अ लेक पुष्कर विच हैज़ अट्रैक्टेड पिलग्रिमेज फ्रॉम द एंशियंट टाइम। सो ये सारे अटैक्ट हुए थे मुस्लिम की तरफ से इन अजमेर एंड पुष्कर, बिकॉज दे डोंट बिलीव इन आइडल वर्शिप। All right, now coming to a network of small towns. Okay, in this time, a network of small towns, 8th century, the subcontinent was dotted with several small towns. So these small towns emerged from a large village. They usually had a mandapika or a mandi of later times, to which nearly villages brought their produce to sell. तो छोटे छोटे टाउन से बड़े टाउन पे आके जहाँ पे मंडपिका
लगता था, या उसको मंडी कहें। आज के समय आप देखते होंगे आपकी सब्जी जो है सब्जी मंडी में मिलती है, जहाँ पे छोटे छोटे एरिया से सभी लोग अपनी सब्जियां लाते हैं और एक साथ ही बेचते हैं, जिससे फ़ायदा भी होता है लोगों को। सो ऐसे टाइम पे ये नियर बाय एरिया से सब इकट्ठा होते थे। एंड दे आर ऑल्सो हर्ड मार्केट स्ट्रीट कॉल्ड हाटा, और कुछ और भी मार्केट स्ट्रीट थे जिसको आप कहते हैं हाटा। एंड दे लाइड विद द शॉप्स, एकदम लाइन से वो अपनी शॉप्स को लगा देते हैं। देवर there were a street for a different kind of artisans such as potters, oil pressers, sugar markers, toddy makers, smith, stone masons, etc. So there are some particular area where the particular craft persons sell their produce, and this is an example for Hatta as a marketplace. Different kind of artisans such as other traveler from town to town, many come from far near to these towns to buy local articles. कुछ लोग अपने ट्रेडिंग के सामान यहाँ बेचते हैं जो दूर से आते थे, कुछ लोग लोकल मार्केट से सामान खरीदने के लिए आते थे for their daily basis, for example betel nut, saffron, spices and other things. Okay, so these are the market. Just see, this is a city market at that time in the 8th to 12th century. There were a samantas, okay, later, जिसको a zamindar built a fortified place in or near these towns. They levied a taxes on the trader, artisans, articles of trade, and sometimes donate the right to collect these taxes to local temple which had been built by themselves or by a rich merchant. These rights were recorded in inscription that have survived to this day. So samantas, according to this temple town की वजह से market hata and your mandis, they started collecting the taxes, and these taxes were recorded in the their inscriptions. So you can read this yellow box where the inscriptions were written, and for particular things the tax were fixed in on the basis of kind or on the basis of कैश, यानी कि आप टैक्स जो है या तो कोई काम करके बता सकते हैं या तो कोई आप कैश देके भी कर सकते हैं. Coming to the next topic, that is your traders, big and small. There were many kind of traders. They usually travel in caravans and formed built to protect their interest. So caravans मैंने आपको क्लास 6 में भी पढ़ाया है. Who are they? So वो अपने सामान के साथ एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रेवल करते हैं विद द प्रोटेक्टेड सराउंडिंग, अपने आप को प्रोटेक्ट भी करते हैं और देयर इंटरेस्ट. देयर वर ऑल्सो कम्युनिटीज लाइक Chitri, Chetiars and Marwari, Oswal, Gujarati trader extensively with the port of Red Sea, Persian Gulf, East Africa, Southeast Asia and China. So these were the people who were named as traders. So these persons were very important, as their names were very important, because Chetiars and the Marwari Oswal, they were still very big trading companies. Okay, so they were very flourishing in these areas, that is your Red Sea, Persian Gulf, East Africa and other part of Asia. The craft persons of Bidar were very famous. Okay, Bidar work is very famous. Their Nile work in copper and silver comes to be known as Bidari. Okay, so बिदार, जो बिदार लोग अपना काम करते थे वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था. क्यों? क्योंकि वो बहुत ही अच्छी सुंदर सी कॉपर की और सिल्वर की लाइन से एक डिज़ाइन बनाते थे जो कहा जाता है बिदरी. ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है. The Panchals or a Vishwakarma community consists of goldsmith, bondsmith, and blacksmith, mason, and carpenter. Contributed a lot of in the building of temples. Temple were the hub of
कल्चरल एक्टिविटीज़। सो जो विश्वकर्मा या पंचाल कम्युनिटीज़ में आते हैं वो व्यक्ति होते थे जो मेटल्स के काम करते थे, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, कॉपर हो, आयरन हो, कारपेंटर हो, ये सभी एक ग्रुप में आते थे, कम्युनिटी थी। सो ये हेल्प भी करते थे टेम्पल्स के डेकोरेशंस में, और टेम्पल उस टाइम कल्चरल एक्टिविटी के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। द वीवर्स सच एज द सलियर एंड द काइकोलर ऑल्सो डोनेटेड द टेम्पल। सो सलाइयर्स एंड कारपेंटर्स जो थे वो भी बहुत ही ज़्यादा फेमस थे टेम्पल को डेकोरेट करने के लिए। And cotton cleaning, spinning and dyeing become specialized and dependent craft। तो ये सारे काम जो किए जाते थे वो इसी एरियाज में किए जाते थे। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत ये स्टैंड बनाया गया है। ओके, एंड दिस इज अ शॉल बॉर्डर। ये 17th सेंचुरी का है बच्चे। Now this is a small box, the changing fortunes of town। So किस तरीके से आपके टाउन चेंज हुए विद द हेल्प ऑफ द वहाँ पे क्राफ्ट चीज़ क्या फेमस है उसके अकॉर्डिंग आपका टाउन भी डेवलप्ड करता है। सो रीड दिस। Now coming to one short story about some particular place where we have found some towns, trading and craft persons activity। A closer look to Hampi, Masulipattnam and Surat. These are the three exporting ports, very important and very famous in history, because these are the first one which emerged at that time. Okay, so Hampi, architectural splendor of Hampi. Hampi was the capital of Vijayanagar Empire। The architecture of Hampi was distinctive, बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर है यहाँ का। It blusted with the commercial and cultural activities during the 15th and 16th century। 15 एंड 16 सेंचुरी में यहाँ पे काम बहुत अच्छे से हुआ था। यहाँ की कल्चरल एक्टिविटीज़ बहुत और कमर्शियल एक्टिविटीज़ बहुत ही फ्लरिश कर रही थी। इनके टेक्निक आप देख सकते हैं, वॉल को किस तरीके से इन्होंने खड़ा किया है। दीज आर देयर आर्किटेक्चर। सो इसको इंटरलॉकिंग सिस्टम भी कहते हैं। जिस तरीके से आप पजल्स को बनाते हैं वैसा ही इंटरलॉकिंग पैटर्न था इनके बिल्डिंग्स का। ओके, Hampi fell into a ruin following the defeat of Vijayanagar in 1565 by the डेक्कनी सुल्तान। तो डेक्कनी सुल्तान जब यहाँ पे आए उनकी वजह से यहाँ का जो टेम्पल हब था वो ख़राब हो गया, क्योंकि लोगों ने यहाँ के टेम्पल्स को तोड़ दिया। आप ये देख सकते हैं, ये स्टोन चैरियट है विथलर टेम्पल का जो हम्पी में है। ओके, यहाँ पे एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसको कहा जाता है महानवमी। ओके, जो हमारे साउथ में नवरात्रि और हमारे भी कल्चर में नवरात्रि सेलिब्रेट की जाती है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट हम्पी। ओके, so sultanis have just ruined these places, Gondwala, Bijapur, Ahmednagar and Birar and Bidar। Now coming to a gateway to the west, सूरत। सूरत को अ गेटवे टू द वेस्ट कहा जाता है, क्योंकि इसकी वजह से या इस पोर्ट की वजह से हमें अपने अपने क्राफ्ट पर्सन्स के जो प्रोड्यूस थे वो हमें अपने वर्ल्ड मार्केट यानी कि बाहर के देशों में भेजना इसी सूरत पोर्ट की वजह से ही पॉसिबल हुआ। इसीलिए इसको कहा जाता है अ गेटवे टू द वेस्ट। ओके, सूरत इन गुजरात was a cosmopolitan city। People of all caste and creed lived here। So this city is very famous because everybody live here, everybody enjoy their work here। The textile of Surat were famous for their gold lace border known as zari and had a market in West Asia, Africa and Europe। सूरत का एक बहुत ही फेमस कारीगरी है जिसको आप कहते हैं जरी वर्क, जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत गोल्ड लेस को कपड़ों में पिरोया जाता है, लगाया जाता है, और इनका मार्केट जो है आपके वर्ल्ड मार्केट में भी है, वेस्ट एशिया में है,
अफ्रीका में है, यूरोप में है। सूरत बिगैन टू डिक्लाइन टूवर्ड्स द एंड ऑफ 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी में आपका सूरत की जो प्रोडक्शन थी वो बहुत ही ग्रेट लॉस में चली गई बिकॉज ऑफ द मुगल एम्पायर, कंट्रोल ऑफ द सी रूट ऑफ द पोर्चुगीज। पोर्चुगीज तब तक आ चुके थे, उन्होंने इनका सी रूट ऑक्यूपाई कर लिया था। कंपटीशन बहुत ही बढ़ गया था फ्रॉम बॉम्बे से और ईस्ट इंडिया से, जिसकी वजह से इनका टेक्सटाइल जो था वो बहुत ही ज़्यादा डिजास्टरस रहा। कमिंग टू द फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स, मसूलीपट्टनम। ओके, अब मसूलीपट्टनम की क्या ट्रेडिंग थी? सो द टाउन ऑफ मसूलीपट्टनम और मछलीपट्टनम लिटरली मीन्स फिश पोर्ट टाउन। ये वैसा टाउन है जहाँ पे फिश मार्केटिंग बहुत ही अच्छी होती है, जहाँ पे फिशेस की कैच करना या उनको पकड़ना या मछुआरे यहाँ पे बहुत मिलते हैं, क्योंकि फिशिंग का जो प्रोडक्शन यहाँ पे ट्रिमेंडस होता है। ओके, सो हियर The Qutub Shahi ruler of Golconda decided to prevent the attempt of the various East India companies. As a result, phrase competitions among various trading groups made the city popular and prosperous. However, Golconda was annexed by the Aurangzeb in 1686 to 1687. So कुतुब शाही रूलर के समय में गोलकुंडा रीजन बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहा था, क्योंकि इनकी टेक्सटाइल, इनकी स्पाइसेस एंड अदर जो प्रोडक्शन ये करते थे वो बहुत ही फेमस था। बट ड्यू टू द various attempts made by the East India Company to destroy this area and control this prosperity, the competition has increased, and these competitions made the people to rely on the other stuff. So by this, the Mughal Emperor Aurangzeb had taken the chance and destroyed the Masulipatam port, and and he had controlled the uh, centers of Masulipatam. The English emerged as the most successful commercial and political power in the subcontinent. Indian textiles were in a great demand in Europe and West Asia. So at that time, your European company had took a charge, and they have decided, and they have controlled the subcontinent hinterland where the production is very high, and they have known that Indian textile were very in demand. So the productions and the exportings were done in Europe and West Asia. Now coming to the next topic, that is now new towns and traders. Bombay, Calcutta and Madras become important city in the 18th century. सो 18th सेंचुरी में तब तक आपके बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास बहुत इंपॉर्टेंट सिटी हो गए थे ट्रेडिंग के लिए, बिकॉज ये एक पोर्ट एरिया था जहाँ पे जो भी बाहर का सामान आएगा सबसे पहले आपके इसी 3 सिटीज़ में उतरता था। द यूरोपियन स्टैब्लिश अ ब्लैक टाउन इन दीज 2 न्यू cities, and merchants and artisans were made to move there. So Europeans at 17th century they reached to India, and from 18th century onward they made black town where they have a clear distinction between the black and white. Black people used to live in the black town is for those person who were the craft person. For example, merchants and artisans were moved there. And there is also a town which is known as white, because rulers occupied the superior residence at Fort St. George in Madras or Fort St. William in Calcutta. So for this is the reason that English merchants have 2 towns: black towns for the craft persons and the white towns for the people who occupied a superior post in their activities or a workplace. Okay, you can see the clear image for how the people were treated as they were in their own home, जो अपनी ही कंट्री में है लेकिन
तब भी इस तरीके से रह रहे हैं जैसे कि वो कहीं बाहर से आए हैं। एंड द पीपल हु आर coming from outside, they are living in just like they are there, they are in their home. Okay class, so this is your chapter. And you see elsewhere that Vasco da Gama have come to India. Okay, he is a Portuguese sailor. Okay, and you will read about the Vasco da Gama, very important, just read to enhance your knowledge. All right, and question answer I will discuss in your PDF file. Thank you class, this is a great chapter. Do read this chapter before starting this video. All right, thank you class, have a good day.